Welcome to all of my students. Now we are discussing the chapter Linear Regressions of class 12 ISC, section C, Agarwal's books. Okay. Now the question number 15. From the equations of the two regression lines, that is 4x plus 3y plus 7 equal to 0 and 3x plus 4y plus 8 equal to 0, find the means of x and y and the coefficient of correlation. And this is the question number 3, and question number 2, Roman 2, the regression coefficients. Yeah. Here both coefficients will be calculated. Number 1, regression coefficients, and number 2, coefficient of correlations. Here is given two equations. At first, we assume that 4x plus 3y plus 7 equal to 0 to be the regression line of y on x. We take it y on x, and that's why after calculating using solving rule, that y equal to minus 4 by 3x minus 7 by 3. This is so simple. Therefore, byx equal to minus 4 by 3. Byx means the regression coefficient of y on x. Regression coefficient of y on x. That means minus 4 by 3. Next, we have to take the another equation 3x plus 4y. 3x plus 4y plus 8 equal to 0 to be the regression line of x and y, and after that by solving rule we get x equal to minus 4 by 3 into y minus 8 by 3. That means here is the minus 4 by 3 is the regression coefficient of x on y. Clear? Now byx, regression coefficient of y on x, into regression coefficient of x on y equal to minus 4 by 3, that means 16 by 9, 1 and 7 by 9, and which prove that it is greater than 1, which is not possible, because we know that the regression coefficient of y on x and also the regression coefficient of x and y, and their multiplication always less than 1. Their multiplication will be always less than 1, but we get here the multiplication of byx and bxy, the greater than 1, which is not possible. And that's why we have to take the equation on the reverse way. That means 4x plus 3y plus 7 equal to 0. 4x plus 3y plus 7 equal to 0 to be regression line of x on y, not y on x. This will be x on y, and this will be y on x. Clear? Our assumption is wrong, and that's why the line of regression of y on x is 3x minus 4y plus 8 equal to 0, and the line of regression of x on y equal to 4x plus 3y plus 7 equal to 0. Clear? Still now we get the original equation y on x and x on y. Clear? Means of x and y bola. We have to find out the question number 1, means of x and y. And here also was the question, the coefficient of correlation. Therefore, from the equation 3x plus 4y plus 8 equal to 0, we get the regression coefficient of y on x equal to byx equal to minus 3 by 4. And after that, the second equation, from the second equation, 4x plus 3y plus 7 equal to x equal to minus 3 by 4 into y minus 7 by 4. By calculating solving rule, the regression coefficient of x on y equal to minus 3 by 4. Okay, because our question was in number 2, the regression coefficients, not only 1 but also 2 coefficients, and 2 coefficients was calculated here, and that byx equal to minus 3 by 4 and bxy is the minus. Both are answered of the question Roman 2. After that,
The third question. What was the third question? The coefficient of correlation. The coefficient of correlation, what will be? The coefficient of correlation between x and y will be, that means rxy. Here is the question, root over byx into bxy. And here we get byx equal to minus 3 by 4 and bxy equal to minus 3 by 4. After multiplication, we get both 2, 3. माइनस माइनस में प्लस होता है और डबल 3 से रूटिंग का रूल है जो 3 and 3 पेयर ऑफ 3 from pair of 3 we get 1 3 and pair of 4 we get 4 at the place of denominator and at the place of numerator. And after that we know that every root has the answer plus minus, because plus will be the answer, y minus will be the answer. So plus minus 3 by 4. But we have to take minus 3 by 4 because we know that the sign of r and byx is same. byx अर्थात रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x क्या है? माइनस है ना, माइनस था ना, इट वॉज माइनस, एंड दैट्स वाई द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x and y r will be the minus, कारण r is dependent on byx, ठीक, अकॉर्डिंग टू साइन. तो byx का जो साइन माइनस होगा तो rx को भी साइन माइनस लेना होगा, प्लस नहीं लेना है. तो देयरफॉर coefficient of correlation between x and y equal to minus 3 by 4. Now we have to find out the question number 1, mean of x, mean of y. But how? Here is also a question that क्या था? So the common point on both regression lines is x bar y bar. This is the common bar. ठीक है, common point. We have to take common point, and after that to find the common point x bar y bar, we solve the equations. That both equations का common point यही होता है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तरफ से क्या मालूम है, जो पॉइंट कॉमन है उसका कोऑर्डिनेट से दोनों इक्वेशन सॉल्व होगा. ठीक है, पहले हमको क्या चाहिए, इस कॉमन पॉइंट पुट करने का कोई जरूरी नहीं है. तो दोनों के इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स. वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, बट हाउ वी हैव टू सॉल्व इट, सिंपल सॉल्व इट एज पर द नॉलेज ऑफ क्लास 9 or 10. दैट मीन्स 4x 3x, then 4x will be multiplied by 3, that means 12x, and 3x multiplied by 4, that means 12x. Because 4 3 का LCM 12 होता है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12. 4x will be 12, 3x will be 12. ओके, पहले 3 से मल्टी करने से 12x, 3 से मल्टी करने से 9y, 3 से मल्टी करने से 21, और 4 से 12x 16y 32. आफ्टर this is number equation C and equation number D. After subtracting D from C, we get C minus D, we get this y equal to क्या है, minus 11 by 7. y equal to minus 11 by 7. ठीक है, चलो y सॉल्व हो गया. यही है हमारा कॉमन पॉइंट y बार, एंड दिस इज द मीन ऑफ y. ठीक है, क्लियर. एंड पुटिंग y का वैल्यू एनी इक्वेशन में, ठीक है, पुटिंग y minus 11 by 7 on the equation number A, we get 4x plus 3y plus 7. That means after solving that x bar, that means x equal to minus 4 by 7, and just like the common point minus a bar x equal to minus 4 by 7, and just like the x mean equal to minus 4 by 7. So mean of x, mean of 7 निकल गया. This will be the answer. Clear? So simple. Just y का वैल्यू पुट करो और x निकल जाएगा. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है?
टू रैंडम वेरिएबल्स हैव रिग्रेशन लाइन्स दिस, ठीक है. कैलकुलेट द मीन values of x and y and the coefficient of correlation and the standard deviation of y given variance of x is 25. তাহলে the mean values of x and y how the same as 15 number 1. क्वेश्चन नंबर 15 में 1 जैसे कैलकुलेट किया ऐसे ही कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले इसको तुमको एट फर्स्ट यू हैव टू जज इट which will be x on y and which will be y on x, and after that you can proceed as per question number 15 का 1. Clear? Again repeat that 3x plus 2y minus 26 equal to 0 and 6x minus plus y minus 31 equal to 0. Both are the regression lines, but we don't know which will be the y on x and which will be the x on y, and that's why you have to judge it bix and bxy. You have to find out at first bxy and bix, and after that you have to take decision which equation will be x on y and y on x. After that, after processing that, you have to proceed according to question number 15.1 जैसे सॉल्व हुआ. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा, क्यों ना, मीन वैल्यूज एक्स बार एंड वाई बार. ठीक है, फाइंड एक्स बार एंड वाई बार. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द सेम. बी वाई एक्स बी एक्स वाई मिल जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन वेरिएंस ऑफ एक्स इज 25. स्टैंडर्ड डेविएशन के बिना गिवन वेरिएंस मीन्स क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो हमने डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 ये बोल दिया. तो डेल्टा एक्स क्या होगा? √25, दैट मीन्स 5. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डेल्टा वाई. ठीक है, तुमको क्या बोला? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे दिया, इसीलिए डेल्टा एक्स निकल गया. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डेल्टा वाई, बट वी नो दैट बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. बी वाई एक्स अर्थात रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. यहाँ पर डेल्टा एक्स मालूम है हम लोग को, वी नो दैट डेल्टा एक्स, and as per question number 2 we know that r, and as per question number 1 we know that byx, and that's why you have to put the value of byx, delta x, r, and then we get delta y, because now here also we solved, we solve it. देखो क्या किया, both equation to be derivation of y on x, y, that means bix मिल गया -3/2. पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x मिल गया. एज्यूमिंग, इसको एज्यूम किया, देखो जिसको एज्यूम किया, क्या जो बोला हम करने के लिए वही हम कर दिया यहाँ पर. ठीक है, y on x पकड़ लो तो bix मिल गया. नेक्स्ट इक्वेशन जो है क्या है, देखो क्या है, bxy. नेक्स्ट इक्वेशन यही है, यहाँ पर पकड़ लो x ऑन y का मैंने bxy इक्वल -1/, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या मिल रहा है, 1/4 विच इज लेस देन 1. तो मैंने दिस आवर एजम्पशन इज राइट, आवर एजम्पशन इज राइट, बिकॉज वी नो दैट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 0 का बड़ा और 1 का छोटा, तो 1 इक्वल 0 इक्वल 1, 0 से 1 तक होगा. पहले bix इक्वल टू -3/2. ठीक है, राइट है, क्या दोनों तो इक्वल मिल गया, 1 मिल गया, तो bix -3/2, bix मिल गया. नाउ bx मालूम है, r का वैल्यू क्या होता है, √bx इंटू bxy, यानी तो r अलग करके निकालो, r अलग करके निकालो, नहीं तो यहाँ पर r का जगह में ये पुट कर दो, दोनों ही मालूम है, दोनों को पुट करो. डेल्टा वाई बाई 5 बस पुट कर लिया, बस अपने कैलकुलेशन डेल्टा वाई इक्वल टू
क्या मिला 15 डेल्टा वाई इक्वल टू यहाँ पर -15 आ रहा है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट्स वाई डेल्टा वाई का वैल्यू 15 ही मिलेगा +15 इसको +15 लेना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 क्लियर so this clear now क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है what does it say so that if 5 students get respectively 1 2 3 4 5 marks ठीक है मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से आउट ऑफ 10 in subject A and B out of 10 in subject A and now question number 17 so that if 5 students get respectively 1 2 3 4 5 marks is represented by X out of 10 से एग्जाम हुआ था 10 से कुछ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट कितना स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स क्या क्या मार्क्स मिला सब्जेक्ट ए में क्या क्या 1 10 से 1 10 से 2 10 से 3 10 से 4 10 से 5 और 3 3 5 7 6 मार्क्स वाई सेकेंड वाला जो मार्क्स है सेकेंड वाला जो बी सब्जेक्ट का मार्क्स वाई से प्रेजेंट किया क्या क्या मिला ना 3 3 5 7 6 आउट ऑफ 10 मतलब 10 से 3 10 से 3 10 से 5 10 से 7 10 से 6 The regression equation of y on x can be written as y equal to 1.8 plus x. यही तुमको प्रूव करना है जो इसका रिग्रेशन इक्वेशन जो बनाएगा ठीक है यू हैव टू प्रूव दैट द इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सच कंडीशन ऑफ y on x will be y equal to 1.8 plus x. So at first, then the question says that you have to find out the regression equation of this situation. क्या ना given x equal to क्या है 1 2 3 4 5 जो नंबर मिला पहले वाला एक सब्जेक्ट में ये क्या है ए सब्जेक्ट का और बी सब्जेक्ट का क्या मिला बी सब्जेक्ट का मिला 3 3 5 7 6 তাহলে therefore sigma x equal to 15 sigma y equal to 24 sum of x sum of y x y क्या होगा ना दोनों को मल्टी करो 1 into 3 2 into 3 3 into 5 4 into 7 5 into 6 that means 3 6 15 8 28 30 sigma x y equal to 82 and after that you have to find out x square equal to 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square that means 1 4 9 16 25 sigma x square equal to 55 why we find x, y, xy, xy because we know that the regression coefficient of y on x, what is the equation, what is the rule, what is the formula that byx equal to n into sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n into sigma x square minus sigma x whole square. That means we have to find out xy, sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x square, sigma x का whole square. तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना होगा देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाला सिग्मा एक्स वाई बाकी सिग्मा एक्स वाई हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर बस इसीलिए हम वाई स्क्वायर बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है वी हैव नो नेसेसिटी टू प्रिपेयर वाई स्क्वायर बिकॉज वाई स्क्वायर के इज नॉट रिटेन इनटू द इक्वेशन बी वाई एक्स क्लियर चलो एन इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स 5 स्टूडेंट का
हर सब्जेक्ट में for x and y, and that's why after putting this value sigma x y sigma putting करने के बाद 50/51 उसके 1 मिल रहा है. ठीक है, चलो बी वाई एक्स क्या मिला? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, दैट मीन बी वाई एक्स इक्वल टू 1. द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, दैट इज क्या? रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा? वाई ऑन एक्स मीन्स वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. बस बी एक्स मालूम है, लेकिन वाई बार एक्स बार तो मालूम नहीं है. तो वाई बार क्या होता है ना? मीन ऑफ वाई. देखो मीन ऑफ वाई कैसे निकला? वाई सिग्मा वाई बाई एन, 24/5 मिल गया. एक्स बार मीन सिग्मा एक्स बाई एन 23. তাহলে আমরা सिग्मा एक्स मालूम हो गया, सिग्मा वाई बार बी एक्स भी मालूम हो गया. बस पुट कर दो. पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर मिल रहा है. क्या मिल रहा है? आफ्टर सॉल्विंग दैट वाई इक्वल टू एक्स, 1 से मल्टी करो, एक्स माइनस 3, 24/5 मीन्स 4.8. यहाँ पर प्लस, आफ्टर कैलकुलेटिंग we get y equal to x plus 1.8, and this is the, we have to prove that the regression equation will be y equal to 1.8 plus x, and also we have got क्या? y equal to x equal to 1.8 proved. Thank you. Now question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो 18 क्या बोल रहा है? Fit a straight line to the following data and treating y as the dependent variable. Y is a dependent variable, hence predict the value of y when x equal to 16. Value of y निकालने के बोला when x equal, तो माने you have to create an equation, regression equation of y on x, and after that on that equation you have to put at the place of x 16, and then you will get the value of y. Clear? And this is the same to same question number 19. Question number 19, and this will be the homework. If you do not solve it, you remark me and I will solve you. ठीक है? Clear? And comment me. Thank you. Now we are discussing question number 18. Fit a straight line to the following data, treating y as the dependent variable. Y as the dependent variable, whereas the table x equal to such and y equal to such, hence predict the value of y when x equal to 16. So then at first we have to create a regression line of y on x. Okay, and after that in that equation of the line we have to put x equal to 16, then we will get the value of y, and this will be the answer. And this is the same to same as question number 19, and as per I will give you as a homework of these questions, and you have to do your homework with the help of question number 19, which is given after which is given now, that question number 19 question number 19, fit a straight line to the following data, treating y as the dependent variable or treating x as independent variable. Find the line of best fit for the following data. Data are, here is x such that x 15, 12, 11, 14, 13. Here is the x. Okay. Hence predict the value of y when x equal to 10. The first here is given that number of items or data
per variable is 5. Okay, number is per variable. X means 5 data and y means y has also 5 data. That means n equal to 5. We have to find the regression line or equation of y1x, because here is given that treating y as the dependent variable, and that's why we have to find the regression line of equation of y on x. Since find the value of y when x equal to 10, and here also the predict the value of y when x equal to 10, then you have to find the regression line of y on x. The regression line of y on x equal to y minus y bar equal to byx, coefficient of regression of y on x, and x minus x bar, x mean, y mean. And after that we write, there is, देखो क्या बोल रहा है, find the value of y when x equal to 10, and the regression line of y on x is y mean equal to byx, x minus x bar. Here is a question, because we have to make y as a subject, and that's why here also given that x, y such from the table, and therefore x square equal to this 15 square means 2 to 5, 12 square means 144, and such, and xy means x into y, 15 to 25, 375, 228, 336, and that. Here byx equal to क्या, n equal into sigma xy minus sigma x sigma y by n into sigma x square minus sigma x square whole square, and that's why we have to find out sigma xy, sigma x square, and then we get now sigma x 65, sigma y 129, sigma x square, sigma xy, and byx क्या है ना, the regression coefficient of y on x, ये तो मालूम है. Now we have to follow the formula and also get the answer. this here is the given, the value putting, and byx equal to minus 2 by 5. Clear? Now the regression line of y on x is की होगा y minus y bar, this, and after that y minus y bar तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, here is not given to the question y bar, and that's why we have to mean y, sigma y by n, sigma y 129, and number of items is 5, 129 by 5, x bar means sigma x by n, 65 by 13, sigma x, and that's why we have to put y bar at the place of y bar 129 by 5, and at the place of x bar equal to 13. Clear? And after that we get the equation, that is what? Now y equal to minus 2x by 5 plus 31. That calculation. Clear? The value of y, next we have to find out what was the question. The question was the predict the value of y when x equal to 10, and then we have to use that regression line where the y is the subject, and that's why the value of y when x equal to 10. Okay, now we have to put at the place of x 10, after that y equal to 27, and that is the answer, and this sums is equivalent to question number 18. Okay, and the line of best fit is y equal to minus 0.4x plus 31. यहाँ पर देखो minus 2 by 5 था, 2 by 5 means 0.4, 31. ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Find the regression coefficient Byx, Bxy, and the correlation coefficient of R of the following data. Then you have to transfer the all data in bar graph, bar type. Xy, we have to create x square, y square, xy, because here is the question. Find the regression coefficient Byx, Bxy, माने Byx.
y on x and bxy x on y and correlation coefficient r. चलो bx का क्या फॉर्मूला है? bx का फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है. bx का फॉर्मूला बोल रहा है कि n इंटू जो है एक्स वाई माइनस एक्स. याद रखना जब वाई एक्स होगा ना, वाई अपॉन एक्स, देन नीचे का जो फिगर आएगा, क्वेश्चन फॉर्मूला एक ही है दोनों का, सिर्फ नीचे अलग होगा. डिनोमिनेटर, एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर वी हैव टू यूज एक्स. ओके, एंड व्हेन बी एक्स वाई एक्स अपॉन वाई, then you have to use at the place of denominator y. Mind it. Y upon x, and then denominator will be x. X upon y, then denominator will be y. And upper the numerator, at the place of numerator, both are same. n into sigma xy minus sigma x sigma y. Clear? R equal to root over byx into bxy. बस यही फार्मूला है. तो आप एक एक करके निकालो टेबल से, जैसे जैसे है. खूब ही सिंपल बात है. एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 04, 8 स्क्वायर मीन्स 64. ठीक है, एक्स वाई मीन्स 2 इंटू 8. बस कर लो आप. सिग्मा सब मिल गया. आप वैल्यू पुट करो. एक्स बार निकालना है. एक्स बार क्या है ना, एक्स मीन है, तो एक्स टोटल सिग्मा एक्स बाई नंबर ऑफ आइटम्स क्या है 5. निकल गया. ठीक है, एक्स बार निकल गया, वाई बार भी निकल गया. बस बी वाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, रिलेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स ऑन एक्स. ठीक है, द रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, दैट मीन्स फार्मूला पुट करो. देखो क्या आंसर है, माइनस 0.216. यही है बी वाई एक्स का आंसर. क्यों ना तुमको बोला यू हैव टू फाइंड आउट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, एंड हेयर इज द बी एक्स वाई. दैट मीन्स वैल्यू पुट करो. वाई नीचे वाई होगा. अब आंसर होगा माइनस 0.129. एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा ना, रूट ओवर इंटू होगा. दोनों इंटू करके प्लस हो रहा है, प्लस रूट ओवर क्या है 0.216. देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखो. आर इक्वल टू क्या है, ये तो मालूम हो गया ना. बी एक्स आई देखो 0.0129 हो गया. और रिवोल्यूशन जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. पुट करो, माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस का रूट करने से दोनों का कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो. करने के बाद मिलेगा 0.166. लेकिन हम लोग आंसर माइनस लिखा. क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट. क्यों माइनस लिखा, देखो ये तो प्लस हो गया ना. आंसर तो प्लस माइनस होना चाहिए. प्लस तो हो जाए, तो प्लस में सिर्फ माइनस ले लिया. क्यों पे माइनस ले लिया ना, साइन ऑफ आर एंड बी वाई एक्स आर सेम ऑलवेज. अर्थात आर का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो साइन और बी वाई एक्स, अर्थात रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, होना ही होगा. दोनों का साइन कभी अलग नहीं होगा. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स कितना था, माइनस 0.216 माइनस था. इसीलिए आर का भी साइन माइनस ही होगा. इसीलिए माइनस 0.166. क्लियर, थैंक यू. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है. Find the equation of the line of regression on the basis of the following data such. Have to तब कि यहाँ पर बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन, रिग्रेशन लाइन बोला, तो हैव टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटास वाई ऑन एक्स एंड अगेन एक्स ऑन वाई. हियर विल बी द टू आंसर्स ऑफ रिग्रेशन लाइन. एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ वाई ऑन एक्स, and then you have to find out regression line of x on y. Then you have to use byx and bxy into the equation, and both equation will be solved. And this is the same to question number 19 to and question number 20. That's why it will be homework. Same sums. ठीक है, सेम सम्स, वाई बार सेम सम्स. इसको होमवर्क करो. नहीं होगा तो हमको
कमेंट में लिखो, कमेंट बॉक्स में, हम तुमको सॉल्व करके भेज देगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 का 1 देखो क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x if the observations xy are as follows, ठीक है। xy कोऑर्डिनेट बोल दिया सिस्टम में, and find the estimated value of y when x equal to 4. But then you have to find out y on x, and that's why you have to create a regression equation of y on x. Clear? Now you have to create table x y, x square, y square, x y. x तो बोल दिया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो जो बोल दिया, और y क्या है 4 8 2 12, जैसे जैसे है वैसे लिखो, ठीक है। ऐसे लिख दिया, देखो उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालो, एक्स वाई निकालो। नेक्स्ट क्या ना, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन वाई ऑन एक्स, दैट मीन्स दिस लाइन विल बी सॉल्व, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क, ये रिमेनिंग पार्ट होमवर्क है, तुम लोगों को करना है। हम तो सब कर दिया, सिर्फ तुम वैल्यू पुट करके बी आई को निकालो, उसके बाद पुट करो। एक्स बार निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, वी एक्स तो मालूम है कैसे निकलता है, ठीक है। क्यों ना क्वेश्चन नंबर 19 20 सब जगह है, वही हेल्प ले लो, ठीक है। यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 फॉर रिमेनिंग पार्ट। And next question, find the estimated value of y when x equal to 14. Same as question number 19. Same remaining part will be, because all are calculated. All are calculated, and with this, taking this help, you have to solve it. Taking the follow the question number 19 also. Okay. Thank you. ये 22 का 1 हो गया, अब आएगा 22 का 2। क्या बोला 22 का 2, देखो क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर गिवन हियर, दिस estimate the values of y when the value of x is 10, therefore you have to find the regression line or equation of regression, that is क्या ना, y minus y bar equal to vyx इंटू एक्स माइनस एक्स बार, कारण वाई अपन एक्स, इसीलिए वाई को सब्जेक्ट बनाना है, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू एक्स व्हेन द वैल्यू ऑफ वाई इज 5, एंड फ्रॉम दिस लाइन यू हैव टू क्रिएट अनदर इक्वेशन, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार, कारण एक्स अपन वाई, एंड दैट्स एक्स विल बी सब्जेक्ट, एक्स इन माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। क्लियर? Now, and this will be solved, देखो कैसे हो रहा है, this will be solved. Question number 22. From the questions we get x bar equal to 5, क्यों ना 22 का जो 1 है, 22 1 में हम सब कैलकुलेट कर दिया, देख लो एक बार फिर 22 का जो है, देखा सेम फिगर है, 1 2 3 वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, एक्स बार वाई बार, ऑल आर कैलकुलेटेड, ऑल आर कैलकुलेटेड, देख लो। एंड दिस डिटेल्स इज यूज्ड इनटू द क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या 2। फ्रॉम 22 1 वी गेट such value, and the regression coefficient of y on x, that means vyx equal to such, तो vyx equal to 4/3 निकल गया, and the regression coefficient of x on y vxy यही होगा, you know vxy x upon y, and that's why at the place of denominator you have to use y, and vyx, and therefore at the place of denominator we have to use x. After putting that, the regression coefficient दोनों का मिल गया, एक vyx equal to 4/3 and vxy equal to क्या है
bxy equal to 1 by 3. Clear? Now, the line of regression of y1x is this. यार y बार मालूम है, पुट करो 10 टेबल से मिला. bx मालूम है, पुट करो, इसको भी मालूम है. पर पुट करने से हमारा इक्वेशन मिलेगा. क्या है? देखो क्या मिल रहा है. डिवीजन कोएफिशिएंट 1/3 मिला bxy. और आफ्टर दैट the regression line such the value of y1 when x this that means 50/3. ठीक है. अरे क्या मिला? y equal to 4/3 into x plus 10/3. और regression line का इक्वेशन मिल गया y on x. And after that we have to find out the value of e. y when x equal to 10, and on the place x we have to take 10, and after that y will be 50/3. That is the answer, 50/3. Clear? Next क्या बोल रहा है? when x equal to, पहले इक्वेशन बनाओ, x माइनस x बार पुट करो. करने के बाद देखो x सब्जेक्ट है y/3 plus 5/3. And you have to find out the question. There is given that find the value of x when the value of y is 5. Then you have to put y at the place of y 5, and after that x equal to 10/3. This is the answer. So simple. ठीक है. 22. Next question number 23. Next question number 23. The following table shows the ages x and systolic blood pressure of y of 12 women. The following table shows the ages x. इसको कैसे x से पकड़ना है and systolic blood pressure को y से पकड़ना है of 12 women. Here is the table. ठीक है. जो 56 साल का उम्र है उसका ब्लड प्रेशर क्या है? 147 होना चाहिए. ऐसे रीडिंग जो मिला वही लिखा. ठीक है. जिसका 42 उसका 125 है, 172 160 है. ऐसे टेबल बनाया. ठीक है. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y एंड डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ y of a woman whose age is 45 years. Here is the questions, and these questions will be discussed in the next video. Thank you.